Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. I'm starting with a new series जहाँ पर हम 5 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे बिकॉज व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू पिक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें लोगों को जनरली कंफ्यूजन रहता है एंड वील ट्राई टू सॉल्व देम थ्रू दीज वीडियोज एंड आई एम गोइंग टू टारगेट कि मैं 5 मिनट्स में आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ. सो लुकिंग एट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज की हम वीडियो में देख रहे हैं वो है कि who are the people who are disqualified from entering into a contract, who cannot enter into a contract. कॉम्पिटेंसी के बारे में बात हो रही है. अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखें तो कॉम्पिटेंसी में क्या बोला गया है कि माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ओनली अ मेजर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कोई इंसान अगर 18 ईयर्स प्लस है दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर कुछ केसेस में माइनर के केसेस में अलाउड होता है. Generally contracts with minors are void from the beginning, void ab initio. But for example, if the minor has performed his part of the duty under the contract, the other party is to perform, then in that case वो void नहीं खिलाया जाएगा because it is for the benefit of the minor. Then secondly, the party should be of sound mind, lunatic नहीं होना चाहिए, insane नहीं होना चाहिए. That is another qualification. Third is should not be disqualified under the law. There are various categories that fall under this. बहुत से लोग डिसक्वालिफाइड होते हैं अंडर द लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी. अब ये कैटेगरीज कौन सी हैं? एलियन एनिमी. इफ यू नो अ पर्सन इज फ्रॉम अ कंट्री विच इज एट वॉर विद इंडिया तो वो दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं. करना है कॉन्ट्रैक्ट तो यू हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज द अदर कंट्री इज एट वॉर विद अस. देन सेकेंडली convict. कोई इंसान अगर has been subjected to imprisonment or death penalty, that person cannot enter into a contract during the period that he is serving his term. If the term has been pardoned or has already been served, then he can obviously enter into a contract. Insolvent. कोई इंसान insolvent declare कर दिया गया है, then he cannot enter into a contract until he has been discharged by the court that he can enter into a contract now, because obviously the person is insolvent, he won't be able to pay back the other party. Then foreign sovereign or diplomat, they cannot enter into a contract with you unless you take the permission from the government. You will have to take the permission from the government because foreign sovereign and diplomats, they enjoy certain benefits, they enjoy certain immunity, like they cannot be subjected to the jurisdiction of the country unless special permission has been taken and their consent has been taken. Then coming on to companies, corporates. Companies, they can enter into a contract. Obviously, companies do enter into contracts, but then what needs to be checked that their AOA or MOA, that is Memorandum of Association, Article of Association, let them do so. Only in that case the companies can enter into a contract. So with this, we come to the end of this video. I hope the concept got cleared. In case of any confusion, drop down the same in the comment box below and do subscribe to our channel for more such videos. Press the bell icon for instant notifications and follow us on Instagram where we keep posting daily legal updates.